This conference will now be recorded. So in your previous class, you have seen strings, and first part was introduction. Then we discussed various methods for manipulating a string. In this, you have studied how to initialize string, then how to print a string. There are several methods, okay, like puts function and printf function, okay, using pointers. Okay, so we have discussed all these concepts. And after this was your next topic, read string from the user. Okay, so there are also scanf function and gets function. Okay, then next topic was pointer and strings. Okay, this was our last topic which we discussed in our last lecture. Today we will see standard library string functions. Okay, and after this we will make some programs for user defined string function. Sunday Sabi, are you getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now let us start with standard library string functions. Just a second. So today's topic is this one, standard library string functions. Now, what are these standard functions? This is the definition. Okay. Those functions which are stored in string.h header file are known as standard library string functions. ठीक है, जितने फंक्शन आप string.h header file के अंदर लिखते हो उन सभी functions को क्या कहते हैं, standard library string functions. Okay. And now we will see some important functions for string manipulation. Okay, there are several functions for string manipulation. We will see only most important functions. Okay, so this is the list of most important string functions that are standard, that are in your standard library. First one is, see this one, string length function. We have already done this function in your program. This function is used to find length of a string. Okay, and what is the syntax of this function? You have to write name strlen, and then in bracket what is the argument type here? Argument type is a string. Okay, actually its declaration should be like this, char star here. Okay, और इस function की return type क्या होगी? Int, because the length of a string is some integer value, so this function will return some integer value. So prototype of this function will be int strlen, and here in argument will be of type character pointer. So char star will be its prototype. Okay, and when you want to use it, you have to simply write this. You are calling these functions through this statement. And during calling, you write only name. Okay, there is no need to write data type. So you will directly write string length function like this. This is the first function. See now, second function is here. Okay, string copy. This function has been also discussed earlier. Okay, this function copies one string to another string, and see here in this example, strcpy target is the string in which source string will be copied. Okay, the string which you want to copy, which will be written later on. Okay, first is the target string in which you will copy the string source. Okay? So remember this syntax. Okay, and the return type of this function is void. It will not return anything. It will just copy source to target. Okay, and these target and source are both character pointer strings. Okay, so argument are type of character pointer. Both are character pointer. Next is string and copy. Okay, this is second version of strcpy. Here, when you write strncpy, n denotes the number of characters which you want to copy. Okay, say with this strcpy, all characters of a string will be copied to the target string, and here only the first n characters will be copied to your target string. And syntax is like this. You will write here function name strncpy, then target, then source string, and then n. N will denote number of characters. Okay, so this is a modified version of strcpy. This is also a standard library function. Next is strcat. Okay, we will do program on all of these functions. Okay, then you will get all these
function. How do they work? Okay, just see their definition now. strcat, this is to concatenate two strings. Okay, concatenate होता है इस दो strings को आपस में ऐड करना, जोड़ना उनको, है ना, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पर लिखा, इसका सिंटैक्स देखो क्या है, strcat, then you write here target and then that this is source. Okay, so इस केस में strcpy में क्या होगा, source string will be copied to target, it will replace the data which is already stored in target. But in strcat, in concatenation function, the source string will be appended after the last character of this target string. Okay, so your target string is UID and last character is T. So and your source string is CSC. So after T, CSC will be added. So and that string will be stored in which string? Target string. So your target string will become UID CSC. This is the working of string concatenation function. Okay. And next is modified version here again, just like strcpy. Here only first n characters of a source string will be appended to the target string. Okay, and this is the syntax: str and cpy target source, and then number of, you will specify here number of characters which you want to concatenate with the target string. This is str and cat, and next is strcmp. This is to compare two strings. Okay, see this function here. Syntax is strcmp function name. Then here string one will be, you will write string one, and then string two will be written here. This function will compare two strings, and its return type is integer. Remember this thing, its return type is integer. Actually, its return type is pointed to an integer. Okay, it returns the its return type is integer. It will return the difference of ASCII value of characters which do not match. Okay, if they match, they will return 0. For example, say if string 1 is A, okay, simply A is string, and this string 2 is B. Okay, now this function will subtract B from A. Okay, so value of ASCII value of A and B when they are in sequence. So when you subtract them, the output of this function will be -1. Okay, so this function will just do comparison by subtracting the ASCII value of corresponding character. Okay, जैसे मान लो आपने A, अब next string, suppose string 1 है AB और ये string है AC, ठीक है, तो पहले कैरेक्टर क्या है A, इस स्ट्रिंग का कैरेक्टर भी क्या है A, तो दोनों मैच होंगे, दोनों की आउटपुट क्या आएगी, दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगी वैल्यू। दूसरी देखो, दूसरा कैरेक्टर था यहाँ पर B, इसका कैरेक्टर था C, तो इस केस में डिफरेंस क्या आएगा, -1। तो फिर से इस फंक्शन की जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या होगी, -1। ये तभी 0 रिटर्न करेगा या तो जब दोनों स्ट्रिंग्स सेम होंगे एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, तो हर एक कैरेक्टर को जब उसकी ASCII वैल्यू माइनस करेंगे तो आपकी आउटपुट 0 आएगी। ठीक है, अगर 0 आएगी तो मीन्स आपकी स्ट्रिंग्स क्या है, इक्वल। ठीक है, लेस देन होगी अगर, तो आपकी स्ट्रिंग 2 होगी ग्रेटर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ASCII वैल्यू। और अगर ग्रेटर वैल्यू आएगी तो उस केस में स्ट्रिंग 1 जो होगी आपकी वो ग्रेटर होगी, है ना। इसको हम प्रोग्राम में देखें आप तब इसको और समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, और इसके जो आर्गुमेंट्स हैं वो कैरेक्टर पॉइंटर टाइप की हैं दोनों। यहाँ पर आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास करोगे। Next is strcmp. This is again modified version of this one. Okay, here you will compare only first 10 characters of two strings. Okay, you will not compare whole string. You will only compare first 10 characters. Next is strchr. This function, okay, this is this function is used to find first occurrence of a character in your string. Okay, if you want to find the location of a character in your string, you will use this function strchr. Okay, this is string character, and this is the syntax. Function name, you will write string here in which you want to find the character, and this ch is a character which you want to find. Okay, for example, suppose string is UID and you want to find T in this string, you will write here UID, and instead of ch you will write here T in single quotes. Okay, remember this thing, ch will be written in single quotes. If you write without quotes, there will be some error. Okay, because characters are always in the single quotes. So this is strchr function. Now next is strstr, string function. Okay, see, the previous was to find only occurrence of a character, and this function is to find the occurrence of a whole string in another string. Okay, for example, see, this is the syntax. Function name, string 1 and string 2. Suppose your string 1 is, this is class of UID CSC. This is your string 1. See, listen carefully. String 1 is, this is your class of CSC. Okay, and in string 2 you want to search CSC, so you will write here string in
double quotes. Okay, CSC will be written here in double quotes. Okay, and whole string will be also written in double quotes. So CSC will be found. Okay, and this function return type is actually pointed to a character. Both functions return type is a character to a pointer. Pointer to a character. It will return the address where that character is found, or either the first character of that string 2 is found. Okay, in this case, the address of character will be returned, and in this case, address of first character of string 2 will be returned. So in both cases, return type is pointed to a character. Now, this is the next function, string LWR, string lower. This is read as string lower. Okay, this function is to convert a string to a lower case. Okay, जितने भी आपके कैपिटल केस के अगर कोई स्ट्रिंग होगी उसको किस में कन्वर्ट करेगा, लोअर केस में, और उसका सिंपल सा सिंटैक्स है फंक्शन नेम, और उसके बाद आप जो भी स्ट्रिंग जिसको आपने कन्वर्ट करना है लोअर केस में वो आप यहाँ पर लिखोगे. Okay, similarly this is there is an opposite of this function, string upper. So this one strupr. Okay, this function is used to convert a string from lowercase to uppercase, and this is the definition here. This is the syntax of string upper function. Okay, next is just a second. Next is string reverse. Okay, the name is strrev. Okay, this function is used to reverse a string. Okay, and syntax is simple, strrev function name, and then you will put a string in as an argument. Next is strdup. This function is used to find a duplicate of string. Okay, if you want to create a duplicate of string, you will just write string under this function, then it will create its duplicate. So there are some standard functions. Okay, we will discuss all of these now in compiler. Okay, all of the working of all of these functions will be done in compiler. After that we will do user defined string functions. Okay, okay, just a second. Okay, you can take the screenshot now. Okay, इसके बाद जो आपकी स्लाइड है यूजर डिफाइंड स्ट्रिंग फंक्शन की है, इसको हम बाद में करेंगे. पहले हम जो प्रीवियस हैं सारे उनको हम वहाँ पर एक बार इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. So close it. Just hold on, compiler is starting. Okay, can you see compiler? Yes, sir. So see, this is program. Okay, here you have included 3 header files. First one is standard input output, and second is console input output, and third is string.h. Okay, so manipulate all string functions, you must include this header file .h. Okay, this is your string.h header file, and after this main function here. Okay, from main function you have declared, say 2 strings are declared here. The name of first string is name, and name of second string is str. Okay,
and size of each of these string is 50 characters. After this, there is a clear screen function. Okay, now you have written here enter first string. Okay, so whatever is the string you will enter through this gets function. Okay, now you know this is the syntax of gets function. You will simply write here name of string. Okay, that is the base address of a string is passed to this function gets. After this, you have printed whatever you have entered through this statement. You have entered first string is printed through printf function. Okay, we can also use here puts function also. What I have used here only printf function. After this, this you have also again asked the second string, and then you have stored this string in str string. Okay, so next statement is you have entered second string. Okay, then you will print what are the content of second string through this statement. Okay, so till here all both the strings are entered and printed. Now after this we will see every function which we have discussed in slide one by one. Okay, so tell me what was the first function which we have discussed. Tell me first कौन सा function किया था जो सबसे पहले किया था अभी string length. Okay, so just let us just do it printf string one की length find out करते हैं ना. ठीक है, string one length is %t. Okay, and we will call the string length function in string function printf function. Okay, str. Okay, and now we want to find the string of length of first string, that is name. So this one. Okay, so with this statement string length function will be called, and whatever is the correct data of number of characters of name will be passed to this string, and it will turn number of characters after counting. See output now. Just a second, let me also use the new line character. Okay, enter first string. Okay, suppose you are entering here hello. Okay, and you have entered hello. Okay, in second string, suppose you are entering UID. Okay. So see the output of string one length is 5. So number of characters in hello are 5. I have only printed number of characters of first string. Okay, we have not done anything with this second string UID. Okay, so this is string length function. Second is, what was second function? आपने स्क्रीनशॉट लिया सभी ने? कोई एक स्टूडेंट स्ट्रिंग उसमें से बताते रहना सभी. या हम रैंडमली स्टार्ट कर दें यहाँ पर कोई भी. चलो कोई बात नहीं, रैंडमली हम जो भी मुझे याद आएंगे यहाँ पर करेंगे, जो बचेंगे फिर मैं आपसे पूछूंगा. कौन सा? string copy. स्ट्रिंग कॉपी. ओके, ठीक है. लेट अस suppose we call string copy function here strcpy. Okay, and in name string you will copy str string. Okay, so this is simply you have to write this statement. Okay, this will copy string to name. Okay, and after this you will print the name string. Okay, printf %s and name. Okay, यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर है, insert. ठीक है, अब इसकी आउटपुट देखते हैं. Suppose first string is enter first string is for UID. Okay, enter second string, that is CSC. Okay, now see you have entered CSC in second string, and after this string one length is found, and then you have called string copy function. Okay, and in string copy function you have copied this CSC to first string. So this is printed here now, CSC. समझाया सभी को? CSC यहाँ पर क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने कॉपी क्या किया था नेम में स्ट्रिंग, और हमने देखो कोडिंग में किसको प्रिंट किया था? नेम को. तो नेम में क्या कॉपी हो चुका है? CSC. सी दिस आउटपुट नाउ वंस अगेन. ओके, नेम को प्रिंट करने के बाद यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट हुआ? CSC, और UID अब यहाँ से मिट चुका है. सो सेकंड फंक्शन था string copy. Okay, similarly let me make it just comment now. We will not use this string length function now.
Now let us use string and copy function. Okay, which will copy only first n characters. So name str, and then I will write a third argument here also. That is, so you want to copy only first 3 characters. Okay, now let us run it once again. Enter first string. So you have written here UIIT CSC is your first string, and second string is ECE UIIT. Okay, this is your second string. Okay, now this is the output. See here ECE TC SC. See, this is the first string. It is UIIT CSC. So from second string, first 3 characters are copied. ECE. These are copied to this string. So first 3 UII will be replaced with what? ECE. Next is TCSC. Okay, this will remain just like in their positions. So this string will be now replaced with EC TCSC. Okay, so this is working of string and copy function. Okay, it will copy only first 10 characters. Okay. Now let us do some another function. Okay, let us use here string concatenation function now. Okay, so you will write here string that, then name str. Okay, now both of these strings will be concatenated. Okay, string will be appended at the last of name. So let us just run it again. Okay, so first string is hello. Okay, you have entered hello, and second string is Deepak. Okay, so the output of this string is hello Deepak. See here, Deepak has been appended after last character of first string. Okay, what is the last character of first string here? O. Okay, so this is the output of string concatenation function. Okay, it will not replace hello. Okay, when you have used string copy function, hello was replaced with hello will be replaced with Deepak. Okay, in this case, Deepak will be appended after last character. This is the difference between string copy and string concatenation function. Okay, now see is modified version, that is string and cat. Okay, and here there should be 3 arguments now. Okay, now so you want to copy only first 2 characters of string to the, you want to append only first 2 characters of string to the name. So let us run it. Okay, so first string is again hello. Okay, and second string is again Deepak. Okay, now say only first 2 characters are appended, that is DE. Okay, so hello DE will be printed in this output. Now समझ आ रहा है सभी को? सर ठीक है, तो इसके बाद हम एक नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं कोई, ठीक है, जैसे कि string reverse. Okay, strrev. Okay, so in this case you have reversed the string using this function. Now you will print the reversed value. Okay, so let us run it. यहाँ पर कोई हमने सिर्फ देखो फर्स्ट स्ट्रिंग को हमने रिवर्स किया है ना, सेकंड को कोई यहाँ पर रोल नहीं है, ठीक है. You have entered string first Deepak. Okay, and then using a string reverse function you have reversed it. Okay, KAPEED. This has been reversed here. Okay, similarly you can also reverse number characters. For example, you write here 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सर वेट सर आपकी आवाज
पीछे चल रही है काफी. Nothing to do with second string. Sys output 98765432 Okay, here numbers are actually treated as characters. Okay, these are going to be treated as a character in compiler. 1 2 3 5 So 6 you रिवर्स हो रहा है. can reverse a number string also using this function. Now let us do some other function after string reverse. Let us say सर अभी भी खत्म नहीं हुआ. str. हाँ जी. हो गया. Okay. Excuse me, sir. अभी देखना, अभी करेक्ट, अभी बिल्कुल अच्छा, अभी वहाँ भी चलो. अभी भी नहीं सर. Sir, जस्ट सेकंड लेट मी वेरीफाई. देखो मैंने यहाँ पर UIT लिखा, अभी आपको दिख गया या नहीं? अभी ओके, दे रहा हूँ ना. कोई बात नहीं, आप इसे ध्यान देना है ना. तो अगर बोलूँ अभी होगा, आप आउटपुट पे ध्यान दो. ठीक है, आपको समझ आएगा. हाँ जी, बोलो जी, बोलो. sir आपकी आवाज आपकी क्लियर आवाज नहीं है. नहीं, कमेंट में आप चैट में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो ना, मैं चैट के साथ में रीड कर लूँगा. ऑडियो लैगिंग. हाँ हाँ, मैं चैट में देखा ऑडियो लैग है आज, है ना. फिर कैसे करेंगे? नेटवर्क स्लो है शायद. अब देखना रिस्पांस अभी ठीक है. Yes, sir. Yes sir. So, okay, so now let us write next function, that is strlwr, to convert a string from lowercase to uppercase to lowercase. Okay. See output. Can you see output screen? Yes, sir. Okay. Now here let us write some character in uppercase. So you have written here, my name is Deepak. Okay. So you have written this statement. Okay. Now let us ignore second string. Okay. So see, the output of this program is my name is Deepak in lowercase. Okay. And when you have entered first string, it was in uppercase, and the output is in lowercase. Can you see this? Yes sir. Okay. So this function strlwr converts a string from uppercase to lowercase. Okay. और अगर इस यहाँ पर आपके मिक्स होंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो जैसे मैंने कुछ कैरेक्टर यहाँ पर मिक्स कर लेता है यहाँ पर, है ना, इस तरह से. उस केस में क्या होगा, जो आपके लोअर होंगे वो सभी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपर में, और जो आपके अपर केस में थे वो एज इट इज रहेंगे. So my name is Deepak. Again here, see the output. Okay. It does not, it will not alter if you enter some mixed numbers in lowercase and uppercase. See the output. Now next is reverse of this function, that is upper. Okay, and let me also make this comment second string. Okay, there is no use of this now. We will use it next time. Now let's run it. Enter first string. Okay, output दीजिए सभी को अभी. Yes sir. For I am entering some letters in lowercase UIIT CSC class. Okay. So see the output here, UIT CSC. यहाँ पर देखो कुछ है, देखो हम इसको देख लेंगे कोडिंग में क्या गड़बड़ हुई, लेकिन यहाँ पर see the output is UIT CSC class. This is the output of
this string after conversion. यहाँ पर इसलिए हुआ था क्योंकि आपने यहाँ पर इनको हमने कमेंट नहीं बनाया था, है ना, इसने सेकंड स्ट्रिंग को भी कोई गार्बेज वाली यहाँ पर प्रिंट कर दी थी, ठीक है, हमने कभी स्टोर नहीं किया। सो नाउ लेट अस रन इट अगेन, CSC class. Okay, so see, this is output UIT CSC class. Okay. Now let us do some another function. Okay, let us do for comparison. Okay, we will compare two strings. Okay, this is most important function. Okay, it can be asked in exam. So let me remove the comments. Okay, we will need two strings for this. And here now let us remove this one. Okay. Here you have written output is %d, and you will use here string compare function. String compare, what is the syntax? You will write first string and then after this you will write the name of second string. Second string is str here. और मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या रिटर्न करेगा, दोनों की ASCII वैल्यू का डिफरेंस। जैसे कि इसको रन करके देखते हैं क्या होगा। कंट्रोल F9। ओके, देख रहे हो आउटपुट? Yes, मैं sir. बीच में पूछता रहूंगा ताकि लैग पता चले, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग है ABC. Okay, so you have entered ABC and enter second string. So you have entered here BCA. ठीक है, तो देखो आप ये आपने दो स्ट्रिंग्स एंटर की हैं, ठीक है। ये 1 बाय 1 कैरेक्टर्स को कंपेयर करेगा, ठीक है। तो पहले दो जहां भी मिसमैच होगा उसी के बाद ये उसकी उन दोनों कैरेक्टर का जो डिफरेंस होगा उसको वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो A और B का जब भी डिफरेंस फाइंड आउट करेगा तो -1 इसकी आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में हो गए। ASCII वैल्यू ऑफ A कितनी है, स्मॉल a की 97 है, ठीक है, और कैपिटल की 98, इसकी B की 98, ठीक है। तो इस तरह से देखो इनकी आउटपुट क्या आई आपके पास, आउटपुट इज -1, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा, तो जो आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग थी, मैंने कहा था जब आउटपुट नेगेटिव आएगी तो आपकी जो फर्स्ट स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर जो भी मैच किया होगा वो सेकंड कैरेक्टर से लेस होगा, मींस प्रीवियस होगा कहीं भी, ठीक है। तो इसकी आउटपुट -1 आएगी उस केस में। अगर ये दोनों देखो यहाँ पर ए बराबर होते, ठीक है, तब उसने नेक्स्ट कैरेक्टर कंपेयर करनी थी B और C, तब भी आउटपुट क्या नहीं थी, -1 ही, है ना, क्योंकि इन दोनों में भी डिफरेंस क्या है, -1 का, ठीक है। जितना भी डिफरेंस होगा उतना वो आपको प्रिंट करके दिखाएगा। जैसे कि लेट अस रन इट फॉर सम अनदर इनपुट, सी हियर A B C, this is first string, and now you will write here A and you will write here D, okay, and C is 4, okay. So see, now first two characters are same, so their ASCII value, difference of their ASCII value will be 0, okay. So we will now compare next two characters, that is B and D. Now there is some difference, okay, B minus D, okay. How many character difference कितना यहाँ पर B से D तक, 2 characters का, ठीक है। So see, now output is -2 here, okay. So ये भी अभी आपको क्लियर हुआ कि आपकी जो सेकंड स्ट्रिंग थी, ठीक है, उसका जो सेकंड कैरेक्टर है यहाँ से 2 लेटर दूर था, यहाँ से B से, ठीक है। तो जो कंपेयर, ये स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन की आउटपुट है आपकी, है ना। और अगर दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल इक्वल हो तब आपकी आउटपुट क्या आएगी, 0। जैसे कि यहाँ पर रन करते हैं, कंट्रोल F9, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग इज UIT and second string is also UIT, okay. So now see, आउटपुट इज 0, ओके। अब इसने सारे कैरेक्टर्स का डिफरेंस किया होगा, U से U का तब भी 0 आएगा, I से I, सभी T से T, जहां तक आप ये लास्ट तक पहुंचाएगा, ठीक है। और जो भी लास्ट का डिफरेंस होगा फिर उसको वो प्रिंट करेगा, तो लास्ट में 0 आएगा। तो 0 अगर आपकी आउटपुट आएगी तब आप कह सकते हैं दिस स्ट्रिंग्स आर इक्वल, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, जैसे कि मैं एक स्ट्रिंग करता हूँ A, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग करता हूँ कैपिटल A, ठीक है। अब ये केस सेंसिटिव पे भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आपको लग रहा है दोनों स्ट्रिंग सेम है, दोनों में A है, लेकिन जो स्मॉल a की वैल्यू है ASCII वैल्यू वो कुछ और है और कैपिटल A की ASCII वैल्यू कुछ और है, ठीक है। तो सी डिफरेंस इज 32, ओके।
तो जो कैपिटल ए की एक्स का वैल्यू हुआ है 65 और स्मॉल ए की वैल्यू है 97। तो 97 में से जब 65 आप माइनस करोगे तो आपकी आउटपुट आएगी 32, इस तरह से। ठीक है, तो इसके लिए इस तरह से आप एक कोड लिख सकते थे वैसे, जैसे अगर आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया इंट n, ठीक है, और ये जो फंक्शन है आपने n में स्टोर कर लिया, n इक्वल टू स्ट्रिंग कंपेयर करके। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस यू कैन राइट इफ n डबल इक्वल टू 0 प्रिंट है both strings are same, else printf both strings are not same. Okay, so I will just write here not same. कि अगर 0 आएगी तभी स्ट्रिंग सेम होगी, अगर लेस देन इक्वल टू वाला केस है तो आपकी स्ट्रिंग इक्वल नहीं होगी। स्टेटमेंट मिसिंग, यहाँ पर डबल हार्गी ब्रैकेट कंट्रोल F9. Now status enter here UIIT CSC plus first string and again UIIT CSC plus. Okay, so see here, this is the output, both strings are same. ठीक है, इसकी आउटपुट है, अगर हम इसको रन करेंगे UIT CSC और सेकंड है UIIT ECE, so it will print not same. Okay, is this function clear? समझ आ गया सभी को? Yes, sir. So now let us do some another function. Let me move this integer n now, and now we will do for searching. Okay, so for this कौन सा फंक्शन था सर्चिंग के लिए बताओ? अगर मुझे कोई कैरेक्टर फाइंड आउट करना है किसी स्ट्रिंग में तो कौन सा फंक्शन होगा? है आपके पास स्क्रीनशॉट लिए हुए? नहीं, strchr फंक्शन है आपके पास, है ना? ठीक है, इसी में मैं यहाँ पर लिखूं लोकेशन इज %u, okay, and here you will write strchr, and in name string now, so you want to find a character a. Okay, and I told you have to write it in single quotes. Okay, अगर हम सिंगल कोट में नहीं लिखेंगे तब एरर आएगा आपके पास। ठीक है, तो बाकी मैं मिटाते हैं यहाँ पर, बाकी हमें नहीं है। New line character is also entered here. Let us run this. So function call, okay, we have not closed this function. Okay, there will be two brackets, control F9 now. Now let us see, enter first strings for it is Deepak. Deepak is first string. Okay, enter second string. Okay, इसका हमारा कोई काम नहीं, कोई एंटर करते हैं। ठीक है, सो देखो हमने लोकेशन इज 65480। ठीक है, तो इसने ये कौन सी लोकेशन बताई है? ए की। ठीक है, जो आपकी कैरेक्टर स्ट्रिंग और जो फर्स्ट स्ट्रिंग थी आपकी दीपक, ठीक है, उसमें एक ही जो लोकेशन है वो क्या है? 65480। ठीक है, तो इस हिसाब से के की क्या होनी चाहिए? 481, है ना? ठीक है, यहाँ पर हम चेंज करके देख लेते हैं इसी प्रोग्राम में। यहाँ पर अगर मैं इसको के करूँ, ठीक है, मैं इसको फिर से रन करूँ, ठीक है, सो सी डॉट प्रोट इज लोकेशन इज 65481, है ना? क्योंकि आपका कैरेक्टर कितने साइज का है? 1 बाइट का। तो ए अगर 480 पे था तो के किस पे होगा? 481 पे।
इस तरह से आप हर एक कैरेक्टर की यहाँ पर लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इस फंक्शन के थ्रू strchr। ठीक है, ये रिटर्न क्या करेगा, देखो एड्रेस, तो आप एक एड्रेस के बाद वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, है ना, अगर आपको एड्रेस पता हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं, इस लाइन को मैं चेंज करता हूँ, स्ट्रिंग आफ्टर दिस लोकेशन इज, और इसको मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पर %s के थ्रू। ठीक है, तो इसके ऊपर लिंक कर दी जाए। ठीक है, और इसमें अब हम लिखते हैं यहाँ पर यू, हमने सर्च किया था के, है ना, UIIT के CSC, सपोज ये आपकी स्ट्रिंग है। ठीक है, और स्मॉल लेटर में था के, है ना, ठीक है, तो आपको स्मॉल लेटर में करना पड़ेगा के CSC। ठीक है, तो आउटपुट देखो, स्ट्रिंग आफ्टर दिस लोकेशन इज KCSC, है ना, तो लास्ट लाइन है यहाँ पर, ये आउटपुट है। ठीक है, तो लास्ट लाइन में क्या है, KCSC। तो हमने क्या किया, जहां पर आपको एलिमेंट के मिला था, फर्स्ट स्ट्रिंग देखो, फर्स्ट स्ट्रिंग क्या थी, KCSC। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, हम इसको देखते हैं अभी क्या है कोड में, लेकिन जो फर्स्ट स्ट्रिंग क्या थी, KCSC। ठीक है, तो KCSC के जैसे के मिला, उसके बाद हमने सारी की सारी स्ट्रिंग हमने आउटपुट में प्रिंट कर दी। ठीक है, ये क्यों क्यों पॉसिबल हो, क्योंकि आपका जो स्ट्रिंग strchr फंक्शन है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, पॉइंटर। और पॉइंटर कहाँ का रिटर्न करेगा, ये जहाँ पर आपको उसको कैरेक्टर फाइंड आउट किया होगा। तो अगर हम पॉइंटर की जगह % लिखेंगे यहाँ पर इसको प्रिंट करते टाइम, तो ये सिंगल लोकेशन प्रिंट नहीं करेगा, ये उसका जितनी भी आपकी पूरी स्ट्रिंग होगी उसको टोटली प्रिंट कर देगा यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास strchr फंक्शन है। सिमिलरली दूसरा फंक्शन कौन सा था, str। ठीक है, सेम फंक्शन है। ठीक है, इसको मैं नहीं करूंगा, आप खुद अपने खुद रन करना। यहाँ पर के की जगह आप एक कंप्लीट यहाँ पर स्ट्रिंग लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि सपोज मुझे UIT फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पर UIT इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जगह क्या बन जाएगा, str। जब आप इसको रन करोगे तो ये पूरी स्ट्रिंग का जो बेस एड्रेस होगा, UIT जैसे यहाँ पर आपने लिखा है, तो UIT का जो बेस एड्रेस होगा उसको रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पर नहीं मिलता, देखो ये केस आएगा या कैरेक्टर ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता था आपके माइंड में, ये फंक्शन है। ठीक है, और मुझे फाइंड आउट करना है आपका ए। ठीक है, उस केस में इसकी रिटर्न आएगी 0, नल। जैसे कि इसको मैं रन करूँ, आपने यहाँ पर ए सर्च करना था, हमने UIT लिख दिया यहाँ पर, है ना, तो ए नहीं आपके आप स्ट्रिंग में। ठीक है, सेकेंड स्ट्रिंग कोई भी होगी। ठीक है, सो सी स्ट्रिंग आफ्टर दिस लोकेशन इज नल। ठीक है, और नल मीन्स आपको जो UIT जो है, जो ए था, वो UIT स्ट्रिंग में कहीं नहीं मिल रहा है आपके पास, है ना। ठीक है, तो जब ऐसा केस हो तो ये क्या प्रिंट करता है ऑटोमेटिकली, नल। ठीक है, और नल का क्यों प्रिंट किया आपने, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या लिखा था, %s। ठीक है, अगर यहाँ पर आप %c लिखेंगे, सॉरी %d लिखेंगे, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0। जैसे कि इससे मैं रन करूँ UIIT। ठीक है, नो सी आउटपुट, स्ट्रिंग आफ्टर दिस लोकेशन इज 0। तो हमें कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं मिली जहां पर ए था। ठीक है, तो इसने हमने % यूज किया था, तो 0 प्रिंट करेगा। आप %s लिखेंगे तो वो नल प्रिंट करेगा वहां पर। ठीक है, समझ आया सभी को। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका स्ट्रिंग C4 फंक्शन है, सेम वर्क करेगा स्ट्रिंग str भी। So, कोई और फंक्शन रहता है अभी, बताओ लिस्ट में से। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट सभी कर लिए वैसे। Duplicate. सॉरी, कौन सा, String duplicate. स्ट्रिंग डुप्लीकेट होगा, कोई बात नहीं है ना। स्ट्रिंग यहाँ पर लिख दो strdup एंड change this string
here just like percent s, now string duplicate, and you will find duplicate of name string. Okay, so you will write your name. Now let us run it. Okay, so this is your first string UIT. Okay, this is second string CSC. Okay, now see output is string UIT because you have found here duplicate of name string, and name string is what? It is UIT. This function will just duplicate the argument which will be given to this. So you have given here name as an argument. So this is duplicate, and see one more thing. जो आपका string compare function था, ठीक है, this is string name और str, ठीक है, यहाँ पर हमने आउटपुट शो करनी थी यहाँ पर, ठीक है, सो सी आउटपुट दिस इज %d, ठीक है, इसके जीरो वैल्यू कब आएगी? जब नेम और स्ट्रिंग दोनों के होंगे सेम, है ना। लेस वैल्यू आएगी जब स्ट्रिंग 1 जो होगी वो नेम से ग्रेटर होगी, ठीक है, एस्काई वाइज, है ना, वैल्यू ऑफ एस्काई की टर्म में, और इस तरह से इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी जब नेम की वैल्यू एस्काई वाइज ग्रेटर होगी str से, ठीक है। तो अगर इस प्रोग्राम को भी रन किया जाए, ठीक है, जैसे कि फिर से एक बार रन करके दिखाता हूं आपको, UIT यहाँ पर आपने लिखा, ठीक है, और यहाँ पर आपने कैपिटल में UIT लिखा, ठीक है, तो कौन सी स्ट्रिंग ग्रेटर है? 2, क्योंकि इस जो यू स्ट्रिंग है, सॉरी, जो कौन सी स्ट्रिंग ग्रेटर है? फर्स्ट स्ट्रिंग, है ना, क्योंकि जो स्मॉल ए है उसकी एस का वैल्यू ग्रेटर है कैपिटल ए वाले से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसकी आउटपुट क्या आई? 32। अगर आप ये केस को इग्नोर करना चाहते हैं ना, है तो वैसे एक्चुअल स्ट्रिंग है, दोनों सेम है, ये भी UIT है और वो भी UIT है, ठीक है। डिफरेंस क्या है? फर्स्ट वन इज इन लोअर केस एंड सेकंड इज इन upper case. Okay, so if you want to ignore the case, there is another function that is strcmp I series. And here, okay, you will write I at last of strcmp. So now let us again run it. Now, so you have again entered in small letters, and then you have entered in capital letter UIT. Okay, so see now the output is 0. Okay, it has ignored the cases. इसने केस को इग्नोर कर दिया, इसकी आउटपुट अब 0 आएगी। तो 0 आएगा मीन्स दोनों स्ट्रिंग्स क्या है? इक्वल। हमने अभी प्रोग्राम करके देखा था यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे strcmp I है, आप इस I को कहाँ पर पुट करते हैं? इन बिटवीन, इन मिड ऑफ दिस strcmp, दैट इज हियर, दिस इज द लोकेशन। ओके, अगर यहाँ पर stricmp लिखोगे तब भी सेम ही बात है ना। तो ये strcmp I और stricmp दोनों सेम वर्क करेंगे, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर CSC लिखा आपने, यहाँ पे CSC लिखा, ठीक है। सो अगेन आउटपुट इज 0 बिकॉज इट हैज इग्नोर्ड द केस हियर। सो ये भी एक फंक्शन था, ठीक है। कुछ और फंक्शन भी थे वैसे, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, अभी आपने strchr किया एक फंक्शन, ठीक है। ये क्या फाइंड आउट करता है? फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है। अगर आपको लास्ट अकरेंस चाहिए तब आप इस फंक्शन का नेम क्या चेंज कर देंगे? rchr, ठीक है। जैसे इसको मुझे फिर से फाइंड आउट करना है, टी कैरेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर लोकेशन आती थी %u, तो आपने स्ट्रिंग एंटर किया UIT IT, तो सेकंड स्ट्रिंग कोई भी हो, YY कोई फर्क नहीं, ठीक है। सी आउटपुट इज 65482. So this 65482 is the address of which T? The last T in IT word. Okay, जो it word लिखा आपने UIT के बाद IT, ठीक है। तो ये उस T की आपके पास आउटपुट है, ठीक है। अगर आपको पहले वाली T की आउटपुट चाहिए तो आपको क्या सिंपली लगाना पड़ेगा? strchr। देखिए इसी को मैं अगर मैं कॉपी कर दूं एक बार फिर से, एडिट,
Just a second. Just अब हमने दोनों फंक्शन यूज किए एक साथ है ना, पहला strrchr और दूसरा है strchr। जो पहला फंक्शन है strrchr, ये क्या रिटर्न करेगा, लास्ट टी की एड्रेस, और strchr क्या रिटर्न करेगा, पहले टी जहां पर अकर होगा उसका एड्रेस। जैसे इसको फिर से रन करते हैं, और फिर से सेम स्टेटमेंट लिखते हैं UIIT और IT, सेकंड स्ट्रिंग लेने दो कोई भी होगी, ठीक है। तो देखो जो पहला था कि उसने क्या रिटर्न किया, लास्ट टी का एड्रेस, दैट इज 65482 है ना, पिछले प्रोग्राम में भी आपने देखा था। और जो नेक्स्ट फंक्शन था उसने क्या रिटर्न किया, 479, ठीक है। तो इसने 479 क्यों रिटर्न किया, देखो इससे पहले एक कैरेक्टर क्या है, टी से ले, जो लास्ट टी है उससे पहले आई है, उसका एड्रेस क्या होगा 81, उससे पहले एक स्पेस है, ठीक है, उसका एड्रेस क्या होगा 80, और उससे पहले टी है, उसका एड्रेस क्या होगा 79, ठीक है। तो ये दो फंक्शन है, एक सिंपल strchr है और दूसरा कौन सा strrchr। rchr क्या प्रिंट करेगा, लास्ट अक्रेंस को, और सिंपल chr किसको प्रिंट करेगा, फर्स्ट अक्रेंस को। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आप इस प्रोग्राम में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना, एड्रेस दोनों के प्रिंट किए दोनों फंक्शंस। तो ये फंक्शन था एक, और ठीक है, ऑलमोस्ट सभी फंक्शन हो गए आपके, है ना, ठीक है। अब हम कल क्या करेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे, इनमें से ही कुछ फंक्शन के लिए कि एक्चुअल में इनकी वर्किंग कैसे है, कैसे कॉपी होगा, ठीक है, कैसे आप कनकैटिनेट करते हो किसी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ, है ना, कैसे रिवर्स फाइंड आउट करेंगे। कुछ 4-5 फंक्शन के हम यहाँ पर प्रोटोटाइप बनाएंगे, ठीक है, खुद उनकी कोडिंग करेंगे, इनकी आउटपुट किस तरह से आपको देखने को मिलेगा, आपने कैसे लेंथ फाइंड आउट की इस तरह से, ठीक है। तो बाकी हम प्रोग्राम अब कल करेंगे। ओके, समझ आया सभी को? लिंक मिल जाएगा? हाँ, ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इसका आज का। ओके सर, थैंक यू। Okay, bye everyone. Take care. बाय सर।